In the name of Allah, who is the most beneficent, merciful, and kind, first of all, I want to say Assalamu alaikum to all my students. Today, our lecture is about an anthology of English poetry for grade 7. We are going to read a poem, You Are Old, Father William, by Lewis Carroll. Firstly, I will explain this poem in Urdu. After that, I will explain in English with reference to the context. Basically, this poem is the dialogue between a father and a son. In this poem, the poet says that you are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि एक बेटा जो है वो अपने बाप से बहुत लव करता है, उनकी बहुत केयर करते हुए उनसे डायलॉग कर रहा है और कह रहा है कि फादर, मेरे बाबा जानी, आपको पता है कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपके जो बाल हैं वो वाइट हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप सर के बल कलाबाजी लगाते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। क्या ये एक्सरसाइजेस आपकी एज के लिए सही हैं? तो इसके जवाब में फादर विलियम रिप्लाई देते हैं, अपने बेटे को जवाब देते हैं कि ये जो मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, ये मैं सर के बल जो कलाबाजी लगाता हूँ, ये एक दौर में मुझे ऐसे लगता था कि मैं सर के बल जब कलाबाजी लगाऊंगा तो ये मेरे ब्रेन को इंजर कर देगा, ज़ख्मी कर देगा। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मुझे अपनी ज़िंदगी के तजर्बे ने सिखा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा करने से इंसान फिट होता है, ये ब्रेन को इंजर नहीं करता। डैट्स वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन। यही वजह है कि मैं ये एक्सरसाइज बार बार करता रहता हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. The reference is, these lines have been taken from the poem You Are Old, Father William, written by Lewis Carroll. The context is, this is a poem that is structured as a dialogue between a father and his son. Though the details given for the pair vary, cause and confusion in regard to who is involved in this exchange. This confusion pairs well with the odd inquiries posed by the son as well as the odd responses by the father. This theme involves generation gaps, how different generations can fail to understand one another. In first and second stanza, the son points out that Father William has become aged and poses the question of why he incessantly stands on his head. In second stanza, Father William replies that in his youth he is being afraid to do this, but his age always has taught him he does not have brain to injure. Because of this detail, he has taken to performing the action again and again. Now move on to the third and fourth stanza. The poet says that you are old, said the youth, as I mentioned before, and you have grown most uncommonly fat, yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason for that? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple by the use of this ointment, 1 shilling a box. Allow me to sell you a couple. थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बेटा अपने बाप से कह रहा है कि बाबा जानी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप पे ये फैट आ चुका है, एक अननेसेसरी फैट आ चुका है, आपके जो बॉडी है, आपके जो मसल्स हैं वो ढीले, वो लूज़ हो चुके हैं, फिर भी आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, ये क्या रीज़न है? तो इसके जवाब में बाबा जानी जवाब देते हैं, वो कहते हैं
कि बेटा जी मैं आज भी एक्सरसाइजेस करता हूँ, मैं कुछ तेल कुछ जो ऑइंटमेंट है ख़ास किस्म का एक मरहम है जो 1 शिलिंग का आता है। 1 शिलिंग मीन जो 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 8 आने का वो आता है एक मरहम जो मैं अपनी बॉडी पे मालिश करता हूँ, जिससे मेरे लिम्स मेरे अज़ा बॉडी के जो है ना सपल रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो बाबा जानी उसको मशवरा देते हैं बेटे को कि मैं आपको भी ये बॉक्स शेलिंग का बॉक्स जो है, जो ऑइंटमेंट का जो बॉक्स है, वो मैं आपको भी एक परचेज़ करके देता हूँ कि आप भी अपनी बॉडी की मालिश किया करें ताकि आपके मसल्स भी ताकतवर और फ्लेक्सिबल हो सकें। In third and fourth stanza, the poet explain it. The lack of clarity for significant plot elements continues in these stanzas. In these stanzas, Father William refers the sage, a wise person's answer to the question of why he turned a back somersault in at the door becomes an insult towards youth overall. He asks youth, you should buy an ointment which can keep your limbs flexible. He wants to say that the older generation is in fine shape, but the younger generation have to use an ointment to boost their strength. Your diary is first, second, and third and fourth stanzas of this poem. You are all, Father William. Learn and write on your notebooks with the reference to the context. That's all from my side. Thank you.